माय रिटायर्ड लाइफ फाउंडेशन की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत। नवंबर महीने की सबकी सुनो प्रोग्राम के लिए। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है जिसमें कि हम सबको मौका मिलता है कुछ बोलने के लिए 3-4 मिनट के अंदर में। तो आपके जो पहले स्पीकर है हमारे रमनी मूर्ति जी, मैं उनसे आग्रह करता कि वो आए और पेश करें। रमनी मूर्ति जी, प्लीज कम। यस, थैंक यू सर। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। तो आज मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ जो आपके पास पहले से ही है। नहीं, या पैसे नहीं हैं, वो तो मैं तुम्हें दूंगी नहीं। और न ही शोहरत है, और न ही किसी शानदार केक की रेसिपी है। ये है आपका सुपर पावर। जी हाँ, हर एक के पास यह है, दूसरों को हंसाने और मुस्कुराने की शक्ति। सोचिए जरा, हम जिंदगी में इतना समय बिताते हैं परफेक्ट दिखने के लिए, सही बोलने के लिए, सबको इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया को परफेक्ट की जरूरत नहीं, बस उस एक मुस्कान चाहिए। और मजेदार बात यह है कि यह सुपर पावर बहुत आसान है। आप किसी अनजान व्यक्ति को मुस्कुरा कर देखिए और वो मुस्कुराए, तो बस आप सुपर हीरो बन गए। कोई छोटी सी मजेदार बात बोल बोल दीजिए और सामने वाला इतना जोर से हंसे कि पेट में झटका लग जाए। और हाँ, अगर आप हाथ हिलाकर मुस्कुराएं और भी वह भी हिलाएं, तो लगता है जैसे आप पूरी दुनिया जीत ली है। अब मजेदार बात यह है, लोग सोचते हैं कि यादगार बनने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। एक नया आईफोन खरीदना है, मैराथन में जीतनी है, करोड़पति बनना है। नहीं, बस आप खुद पे हंसिए, एक छोटी सी गलती स्वीकार कीजिए, जैसे अरे यार आज टोस्ट फिर जल गया। और लोग आपको प्यार करेंगे क्योंकि आप असल में मजेदार और असली हैं, बिल्कुल ओरिजिनल। और हंसी तो फैलती है। कभी आपने देखा है कि आप किसी की बात पर इतना हंसी हंसते हैं कि पेट दुखने लगे और सामने वाला भी ज्यादा हंस पड़े क्योंकि आप हंस रहे हैं। यही है आपका सुपर पावर। और सबसे ज्यादा मजेदार चीज ये है, इसके लिए आपको कैप, स्पाइडर या रेडियो एक्टिव पावर की जरूरत नहीं है। तो आज आपसे कहना चाहती हूं कि अपने सुपर पावर का इस्तेमाल कीजिए, मुस्कुराइए, कोई छोटी सी मजेदार कहानी सुनाइए और खुद पे हंसिए, चाहे आप कहीं गिर जाएं या टपक जाएं। क्योंकि हर मुस्कान जो आप पैदा करते हैं दुनिया को हल्का और खुश बनाती है। याद रखिए, आप लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, आपकी उपलब्धियां भूल सकते हैं, लेकिन वह कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। क्योंकि यह सुपर पावर आपके अंदर पहले से ही है। इसलिए हंसिए, हंसाइए और मुस्कुराइए, मजा लीजिए जिंदगी का। क्योंकि इसे इस्तेमाल कीजिए और देखिए, दुनिया का हर मुस्कान के साथ और भी खूबसूरत बन जाती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रमनी मूर्ति जी, आपने बहुत ही उम्दा बात की। हंसिए, हंसाइए, मौज करिए। जिंदगी छोटी है। लोग आपको तो भूल जाएंगे लेकिन आपकी उपलब्धियां को भूल जाकर मुस्कान नहीं भूलेंगे। बहुत बढ़िया बात जी, की आपने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट दी नेक्स्ट स्पीकर रजनी मैडम। Yeah, I'm there. Yeah, okay. Thank you very much, Sengupta sir, and good evening to everyone. Yeah, this is just a forward from one of my friend, which I felt is very nice message. It's danger of assumption. A few months ago, I was invited to a program at a school as the guest speaker.
When I entered the auditorium, I saw some guests I knew sitting at one corner. I went up to them and started to greet them one after the other. I shook their hands, even with the ones I didn't know, until I got to one guest. I didn't know him, and when I extended my hands, he ignored it. After a few seconds, I withdrew my hand. All my thoughts were, what utter nonsense. I kept asking myself that question as I felt very embarrassed and angry, embarrassed for myself and angry at the man. What he was feeling like. I thought all those other guests accepted my greeting. And to my knowledge, I hadn't done anything wrong. I gave him a very scornful look, greeted the remaining guests, and went to take my seat. Even after I sat down, I was still upset and kept stealing glances at the guest to see how he would react to other people. And then I saw it. He was blind. His eyes were open, but he couldn't see at all. The other guests who came to greet him had to touch him first and then take his hand if they wanted to shake hands with him. To my great surprise, he turned out to be my hidden protege who deeply appreciated my lectures. I never knew he had come purposely because his wife informed him I would be the guest speaker for that year's program. In fact, he was waiting to hear someone mention my name so he could stand and hug me. When I heard this, my embarrassment tripled. I felt stupid, very stupid. I was still angry, but this time angry at myself. I couldn't even say a word to him until I got to the podium. My speech for that program changed from recovery to the danger of assumption. Assumption kills like poison. We assume instead of validating. When someone doesn't pick your calls, we assume they are avoiding us. Someone doesn't give us money, we assume they are stingy and wicked. Someone doesn't call, hang out, or visit us as they usually do, we assume they no longer care. We never pause to consider that they might be going through challenges. Like life is diverse. The issues of life are different for everyone. The person who promised you money might have encountered a financial crisis. The person who didn't pick your call might have been in a meeting or two, busy to respond. Key lessons, benefit of doubt. Make excuses for others. Verification over assumption. Always validate your thoughts before reacting. Immaturity shows in offense. Picking offense at every perceived wrong is childish and counterproductive. Examples: someone didn't invite you to their wedding, you pick offense. They didn't wish you a happy birthday, you pick offense. They didn't like your Facebook post, you pick offense. Remember, everyone has battles you're unaware of. The people you need help from also need help themselves. Not everything is personal or intentional. Sometimes people are just busy with their lives and struggles. Grow above offenses, manage disappointment, and maintain relationships. Save yourself unnecessary grudges and, and preserve friendships you may need in the future. Learn to grow above, with, and despite offenses. Yes, this was my article. Thank you very much and namaste. Thank you very much. Thank you, Rajini. I think you spoke one thing very important, that we judge a person by assumption. Right. We come to a conclusion before validation. Yes, before validation. And Something we people, learn. Yeah, something we learn, right? people do maybe wrong to you, but you come to an assumption that people are wrong to you. But Right.
Yes, correct, correct. That has happened so many times, and then you feel, later, no, I was wrong. I, I know. Thank you very Thank you much. for Yeah, the wise thought. Thank you very much. yeah, thank you. May I call the next speaker, Kumar Saab? S. Kumar ji, please come. Yeah, I'm Please. here, sir. Yeah. Yeah. Yeah, good evening, MRL family. Thank you very much, sir. And for those of you who may not know me, I am S. Kumar. Okay. The Mahabharata war is on. Battle is going on severely. Karna is lying wounded with lots of arrows, but the Arjuna is still continuing to shower of arrows to him. And the Lord Krishna is watching everything. He has to ensure Pandava's victory, and he has to protect Arjuna. So he starts. Where he starts, see, Karna is a wretched soul actually. He was ditched by his mother, father, sun god, when he was born, ditched by the mother Kunti when he was born. She left him in the river, and his guru Parashuram also ditched him when he was with a curse. People know all these stories. So Mata, Pita, Guru, all have deserted him. Now the only solace is the Lord. The Lord goes to visit Karna. But is he really going to rescue him, help him or not? Let us see. The Lord goes to Karna. Karna is severely wounded with all the arrows on his body. God asked him, now Karna, will you give me something? I want to ask you something. Ask something what in the battlefield. Karna is in such a state, what he is going to give lying down with arrows in the battlefield. He cannot ask anything materialistic which Karna cannot give. The Lord asked him, I want all your punyas to be given to me. Even with such an agony, Karna smiles little and says, Krishna, you have come to the right place and asking the right thing, which I can give you. But how to give? But, there is no, something you give, there is no deed or other validation or anything. He says all this sun, earth, everything is a sakshi. He takes out the arrow from one of the wound and the blood oozes out. He gives that entire blood in Krishna's hand. Krishna takes it. And Krishna has thus taken all the punyas, good deeds from him. But God has also, in a way, ditched him. He has taken out everything and from him and let him down because he wanted to save the Pandavas. So Karna has given out everything. Then, after taking everything, the god is in tears. He really wonders, what is that he has given me? Charity. I am asking charity at this juncture, and he has given me everything. The Lord embraces him. The Lord cries. The Lord bows to Karna. Perhaps this is the only instance in the epics you may find the Lord bows to one human being. Then something strange happens. Krishna asks Karna, I want to give you something, please ask. This is a strange situation. He has come to take something and has taken everything. Now Karna is literally defunct, nothing he can do. But he wants to give him something. Then Karna asks, what you want? Krishna asks, what you want, you ask. Karna says, even in my future birth, how many births I take, 7 births, 20 births, whatever births, I should never say no to anybody coming to me. The no is not a word from me. I will continue to give whatever people ask from me. Then Krishna says, yes, granted. That's a statement. And having got the work done, the Lord should have left immediately. But the strange question arises, why he waited and asked Karna, what do you want? See, that's a strange thing. Karna, when he gave the blood, one drop touched
the blood touched Krishna's hand, it changes his mind. He has come to take everything from Karna, but the blood of Karna touched Krishna, and he wanted to give something to him. That has changed his entire mind. This is the way the charity works. Charity is glorified by this instance that Karna was giving. Lord also got something in and his final when Karna was in his final state. But the blood has changed Krishna's mind. He wanted to give something, changing his mind. That is the birth of charity, and I think no better way charity can be glorified by these two characters in the epic. That's all. Thank you very much. Thank you, Mr. Kumar, for this very wise story. Let me put in that way, very wise story where, you know, uh, Gyanveer Karma, Dharmavir Karna, whatever you call him actually. Yeah. I mean, is the entire life's story of richness of mind that comes out even at the time of your death. Yeah. Very true. Comes out actually. So thank you very much for reminding us the great character of Karna and very wise thing of the the gifting and the you can go on gifting till the time you can, with the greatness of a man. Thank you very much. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. May I request R.K. Bhattji to please come? Thank you, Sen Gupta, sir. Good evening, friends. Today I will speak a few words on the topic Gotra. Some of us don't know much about our Gotra. We think it is some line Panditji say during the puja, but it is not like that. Do you know the real power of your Gotra? Not a ritual, not a superstition. It is an ancient code. Your Gotra means which rishi mind you are connected to, not by blood, but by thought, energy, frequency, and knowledge. Gotra does not mean caste. Gotra is not about Brahmin, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. It is existed before caste, before surnames, and even before kingdoms here. It is the most ancient system of identity based on the knowledge, not power. Everyone had a Gotra. Even rishis gave Gotras to the students who adopted their teaching sincerely. It was earned through learning. Let us say you are from Vashishta Gotra. That means your ancestral rishi was Vashishta Maharshi, the same sage who guided Lord Rama and even Dasharatha. Same way, Bharadwaja Gotra, you are linked to sage who wrote huge parts of Vedas and trained warriors and scholars. There are 8 original sages. Are first Atri, second Bharadwaja, third Vishwamitra, fourth Jamadagni, fifth Vashishta, sixth Kashyapa, seventh Gotama, and eighth Agasya. Same way, there are 49 Gotras. Some say 108 and some say 120. Each linked to Rishi, who were astronomers, healers, warriors, mantra masters, and nature scientists. Why elders forbid same Gotra marriage? In ancient India, Gotra was used to track genetic lines. Gotra travels through the male line, meaning son carry the Rishi line forward. So if two people of same Gotra marry, they are genetically too close, like siblings. This would cause mental and physical defects in children. Gotra system is an ancient Indian DNA science, and we know it thousands of years ago, way before Western science discovered genetics. Gotra was once used to customize education. In ancient Gurukul, they did not teach everyone the same way. The first question Guru would ask the student, Beta, tumhara gotra kya hai? Tumhara gotra kya hai? Why? Because that told him how the students learn best, what branch of knowledge suits him, what mantras work best for his energy. Students from Atri Gotra might get trained in meditation and mantras. One from Kashyapa Gotra might go deep into the Ayurvedic knowledge. Gotra was not just the identity, it was identity. It was your learning style, your life path. Gotra rituals were not just for show.
When Pandits say your Gotra in the puja, they are not just doing formality. They are connecting your back to the Rishi's energy, calling you spiritual lineage to witness the and bless the ritual. That's why that's why saying your Gotra during Sankalpa, that is start of the puja, is so important. It is like saying the child of Bharadwaja Gotra, Rishi, seek divine help with full awareness of soul ancestry. This is not about religion. This is about identity. Even if someone is atheist, spiritual, but not religious, confused about the ritual Gotra still matters because this is a beyond religion. This is an this is an consciousness. This is a very ancient Indian wisdom that does not quote but silently guide. You do not have to believe. You just need to remember it. Final words. Your name may be a modern, your lifestyle may be a global, but your Gotra is timeless. And if you ignore it, it is like a river that does not know where it came from. Gotra is not just your past, it is your password to future wisdom. Unlock it before the next generation forgets it even existed. With this, I finish my talk on the topic Gotra. Thank you, Sen Gupta sir, for giving me an opportunity to present my views on this topic. Thank you all. थैंक यू बट साहब आपने बहुत ही डीपली बोला, बहुत ही अच्छा चीज बोला। मुझे तो आधा चीज इसके बारे में मालूम नहीं था, आपने बहुत अच्छा बोला। एक्चुअली गोत्रा इज नॉट ओनली योर पास्ट बट इट्स योर पासवर्ड, यू नो, नॉट ओनली टू नो अबाउट द पास्ट बट आल्सो ए पासपोर्ट टू द फ्यूचर। सो नोइंग थैंक यू वेरी मच शेयरिंग सच a deep. Thank you very much. May I request Naveen Dukkal ji? नवीन दुक्कल अनम्यूट करो। हाँ, Well said, everybody, and it is a good start and great opportunity. Good evening, all my brothers, sisters, my powerful speakers, talented artists, and more than that, everyone with a smile on their face. At the juncture of this, I'm a little outside in Delhi, and there's a lot of pollution and a lot of traffic jams, and a lot of marriages taking place. All I can say is बहुत कुछ ज्ञान, ध्यान और म्यान। हम ध्यान से सब प्लान करते हैं लेकिन वो होता नहीं। जब यहाँ पहुंचते हैं तो ओला उबर मिलता नहीं, कभी फ्लाइट मिस हो जाती है, कभी कुछ भी मिस हो सकता है। सो फॉर ओल्ड एज एंड नॉट फॉर यंग एज ओनली, फॉर ऑल टाइम्स, जैसे हम अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे अपने माइंड को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली एंड मोर देन दैट इज आवर हेल्थ केयर, वो ध्यान में करते हुए कुछ स्पीड में चलने के बजाय कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ दिन पहले से प्लान करने के बजाय एक्शन में लाइए। उसके लिए हम लोग ने क्या किया, हम ऑलवेज अज्यूम करते हैं अरे हम ओला उबर को फोन करेंगे गाड़ी आ जाएगी। नो, don't take chances. At least have 5 plans, A, B, C, D, E. A is your action plan of what you have booked. B is your action plan. Suppose अगर वो टाइम पर हम पहुंच गए तो 3 घंटे उसके ऊपर add 3 hours for traveling from your house to the airport or house to the railway station, and from railway station when you reach and land to your whatever journey, make sure you are informed someone or a prepaid car or a taxi. Like Dr. Sengupta always organizes his plan so well. I really admire that. Not only that, in every aspect, advanced planning के बजाय action A, B, C. D is diversity, atrocity, उस हाल में हमने क्या alternative करना है। Fifth is God's name, prayers. So ये सब होते हुए भी पहले अपने आप को धैर्य रखिए। अगर क्राइसिस भी आ गई है तो जैसे लास्ट टाइम एक लेक्चर में हमने सुना था इंटेलिजेंट क्वोशंट, फिर आया इमोशनल क्वोशंट, फिर ए एट्रीब्यूट टू एट्रोसिटी और एनी अननोन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। तो जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, गॉड के हाथ में नहीं है,
लेकिन वो है अपनी कंट्री या प्लेस या जहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं, अब वह विमान में उड़ना है चल के, तो आपने दो टांगे मजबूत रखो। अगर कुछ ना हो तो कम से कम 3 किलोमीटर चलने की हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी डिस्टेंस होता है हर एयरपोर्ट का, वो आधा किलोमीटर वो ऐसे ही चला देता है, आप थक जाएंगे। तो ओके, बगी का अरेंजमेंट है, गेट इट डन, इट कॉस्ट डजेंट मैटर, बट थोड़ा एडवांस में चलेंगे तो यू कैन रिलैक्स एंड रेस्ट फॉर द वेटिंग टाइम व्हेन द एक्चुअल फ्लाइट और द ट्रेन और व्हाटएवर टेक्स प्लेस। सो दिस इज वन लेसन आई लर्न। नंबर टू है, क्राइसिस में लोग कहते हैं अरे कैसे पहुंचेंगे, इट इज वेरी इजी एंड ऑल। डोंट बिलीव दैट। एक्चुअली आप न्यूज मीडिया, वेदर कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, हर जगह का सोचिए। क्या रोड्स बंद तो नहीं है, ट्रेन चल रही हैं, एरोप्लेन चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन आपको अपने आप को चलाना है, आपको अपने आप चलाना है, सेल्फ केयर। तो मेक श्योर आपकी जो मेडिसिन हैं वो सही जगह पे है, आपका टेलीफोन बैटरी चार्ज है कि नहीं, रिचार्ज है, उसमें पैसा है, ठीक है, सब जगह रखने के बाद चेक बिफोर यू लीव। जैसे हम लोग बैगेज या कहीं भी जब चेक करवाते हैं, स्पेशली एट द सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई लॉस्ट ए कोट लाइक दिस, हाफ कोट, जस्ट बिकॉज इन ए हरी आई लेफ्ट इट। आई डोंट ब्लेम एनीवन, आई एम द वन। सो चेक एंड काउंट। अगर वो क्लियरेंस हो जाता है, उसके अगले लाइन में फिर से काउंट योर थिंग्स, ओके, विच इज वाज द हैबिट एंड स्टिल मेनी ऑल ईच वन ऑफ अस इज डूइंग ए गुड जॉब। नंबर थ्री, हमारी प्रेजेंटेशन और गाने में हम बहुत चुस्ती ले रहे हैं, बट फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो जो भी रिकॉर्डिंग होती है, जो भी हमारे डॉक्टर सेन गुप्ता इतना हमको हेल्प करते हैं कि गिव्स एवरी रिकॉर्डिंग विदाउट एनी चार्ज, वो यूट्यूब में भी आता है, हर जगह होता है। वो पल फिर से रिपीट करके दोहराओ कि इसमें हाउ कैन बी, हाउ कैन आई बी ए बेटर परफॉर्मर एंड हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, व्हाट आर द लर्निंग पॉइंट्स, ये सीख के इम्प्लीमेंट करना है। अगले टाइम मैं इसमें इम्प्रूव करूं। मैं चाहे फोटोग्राफर, मेरे गुरुजी बैठे हैं उधर आज, अमर अमर सिंह, आई मीन अमरजीत सिंह राव सर, हर जना पूछते हैं दुग्गल तुम इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो। मैंने कहा भाई ऐसा है कि सबका आशीर्वाद भी होना चाहिए, और अपना जो पोज मारना है, जो भी मारना है, वो सही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और उसके बाद वो हर फोटो को देखो और नीचे एक दो तीन लाइनें अक्षर लिखो। जैसे कोई स्माइल करता है तो उसको लिखते हैं हमें तुमसे प्यार कितना कि तुम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते, ये कैमरामैन कह रहा है उस फोटो को देखकर। अगर वही अगर रियलिटी में बोलता तो शायद एक थप्पड़ मिल जाता मुझे, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। तो दिस इज योर सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ प्रेज। और जैसे हमारे पहले स्पीकर ने कहा कि स्माइल इट इज, आई कैन से देर इज नो मेजर, जितना हंसोगे खुश होगे, मगर उसके बाद थोड़ा कंट्रोल भी करो, नहीं तो क्या होता है, सीरियसनेस नहीं होता तो बोलते ये पागल है। तो दिल तो पागल है, दिल है दीवाना, है मुश्किल है मेरा जीना। लेकिन आंख मारे, अभी आपने हर गाने में सुना होगा आंख मारे, एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ द आई इज द beholder, the cameraman, or the lens through which we see this world. So just make sure that you are happy within, happy with the environment. If not happy or unhappy, let go, let go, let go. And in the end, just say the gratitude. Thank God I returned home safely. Thank God मैं अपनी कुर्सी पे ठीक ठाक हूँ. Thank God I have a smile on my face. Thank you very much for this evening. Thank you each one and each of you who have blessed me with this. Thank you, sir. Jai Hind. थैंक यू वेरी मच नवीन जी, आपने बहुत बातें बोल दी, लेकिन आपका जो अभी दिल्ली ट्रिप था प्रोबेबली एक्सपीरियंस है, आपने बहुत ज्यादा बोला, या आपको शायद Thank you. प्लानिंग आपने अच्छी तरह से की और नहीं की होगी, आपको मुश्किल आया होगा। तो मैंने आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है दैट केम आउट वेरी वेल थ्रू दिस पर्टिकुलर टॉक। एंड आई थिंक Thank एवरीबॉडी शुड हैव द प्लान, आपने जो बोला प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, आई थिंक दैट इज अ वेरी you. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू वेरी मच नवीन जी फॉर दी Thank you. एंजॉय योर ट्रिप इन दिल्ली। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for your blessings, all of you, each one. Thank you. मोदी साहब, आर के मोदी साहब। Yes, sir. Thank you for calling me and giving me chance to speak something. मैं आपको एक ऐसे शख्स के विषय में बताऊंगा जिसके एक भारत, मिनट मोदी साहब, एक मिनट, सलूजा साहब आपको इससे बाद में बुलाते हैं। चलिए मोदी साहब बोलिए प्लीज। हाँ, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसके भारतीय होने के बावजूद भी इस शख्स को जापान के लोग न सिर्फ जानते हैं बल्कि भगवान की तरफ पूछते भी हैं। हम जिस भारतीय की बात कर रहे हैं उसका नाम है राधा विनोद पाल। शायद आपने इस महान शख्स का नाम न सुना हो, लेकिन जापान में इसको महान माना जाता है। बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो इन्हें न जानते हैं न पहचानते हैं,
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस भारतीय को कई देश के बहुत कम लोग जानते हैं, जापान के यासुकनी मंदिर और क्योतो के योर्जिन गोकोकु देवालय में उसी शख्स की याद में विशेष स्मारक बनाए गए हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे कहानी क्या है। चल में राधा विनोद पाल का जन्म 1886 में सलीमपुर गांव, नादिया जिले, जो वर्तमान बांग्लादेश में है, के एक हिंदू वैष्णव परिवार में हुआ था। उन्होंने 1903 में 1903 में प्रवेश परीक्षा, 1905 में राजशाही कॉलेज से एफए की परीक्षा विशिष्टताओं के साथ पास की थी। राधा विनोद पाल ने प्रेसिडेंसी कॉलेज, उस समय ब्रिटिश में ये जो था कलकत्ता में, गणित में बीए ऑनर्स 1907 में और एमए 1908 में किया। 1911 में बीएल की डिग्री भी ली। पाल ने आनंद मोहन कॉलेज मेमन सिंह में गणित के लेक्चरर के रूप में काम किया था। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज से मैथ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की पढ़ाई की थी। भारत की ब्रिटिश सरकार ने 1927 में पाल को लीगल एडवाइजर अपॉइंट किया था। उन्होंने 1923 से 1936 तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम किया। पाल जी ने 1941 में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज और 1944 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में काम किया। द्वितीय विश्व युद्ध कई देशों की राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नए राष्ट्रों का गठन हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध की तरह पराजित धुरी राष्ट्र कौन थे? जर्मनी, जापान और इटली को उस रक्तपात के लिए दोषी ठहराने की बेचैनी थी जिसमें सभी शामिल थे। दुनिया में युद्ध अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कई मुकदमे चले। उसमें से एक था द इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर द फार ईस्ट, जिसे टोक्यो ट्रायल के नाम से जाना जाता है। और ये टोक्यो ट्रायल्स अपने विवादास्पद फैसलों के लिए भी जाना जाता है। हालांकि एक व्यक्ति जो महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरे वे भारत के न्यायमूर्ति राधा विनोद पाल थे। राधा विनोद पाल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने जो युद्ध अपराध किए थे उनके खिलाफ चलाए गए टोक्यो ट्रायल्स में भारतीय जज थे। 11 जज थे उसमें, जिसमें एक ही भारतीय जज थे जिसे ब्रिटिश इंडिया ने अपॉइंट किया था। 11 जजों में राधा विनोद इकलौते ऐसे जज थे जिन्होंने सभी युद्ध अपराधियों के निर्दोष होने का फैसला दिया था। तब इन युद्धबंदियों में जापान के तब के प्रधानमंत्री हिदेको तोजो समेत 28 अन्य नेता और बहुत से सैन्य अधिकारी भी शामिल थे। न्यायाधीश पाल ने अपने फैसले में लिखा कि किसी घटना के घटने के बाद उसके बारे में कानून बनाना उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने युद्धबंदियों पर जो मुकदमा चलाने को युद्ध जीतने वाले देशों की जबरदस्ती बताई थी और सभी को छोड़ने का फैसला सुनाया था। हालांकि अधिकांश जजों ने 28 युद्धबंदियों को दोषी करार दिया था। उसमें से 7 को प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो सहित मृत्युदंड, 16 का आजीवन कारावास, 2 को कम अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि 2 की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी और 1 को सुनवाई के दौरान पागल घोषित कर दिया गया था। यही वजह है कि जापान में आज भी उन्हें एक महान व्यक्ति की तरह सम्मान दिया जाता है। जब साल 2007 में 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए तो उन्होंने कोलकाता में राधा विनोद पाल के बेटे से मुलाकात की थी और तस्वीरों का आदान प्रदान किया था। तो हमें ऐसे अनसंग हीरो को भी याद करना चाहिए। थैंक यू। मोदी जी, आपने राधा विनोद के पाल के बारे में बहुत ही अच्छा किया, बिकॉज ही इज ए रिलेटिवली unknown person in India. जी 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 जी। The judicial circle, outside the जी। judicial circle, outside the legal circle,
but he was considered to be an exceptionally brilliant person. करेक्ट And सर. exceptionally brilliant person in terms of the law. And उनका जो soul judgment of dissent जो था, that is still quoted as one of the best argued judgments, impartial best argued judgments in the world. करेक्ट सर. तो आपने बहुत अच्छा बोला राधा विनोद पाल के बारे में. Thank you very much for bringing him थैंक यू. forefront. May I request for the last speaker of the day, that is हमारे अग्रवाल साहब. Am I audible? Yes, very much audible. Sir, I am here. All my friends, and thank you, Dr. Sengupta ji and MRL, for giving me an opportunity to address this small story about coffee. Last time I had talked about the story of tea, how it originated and globally traveled to reach your mouth. Today I am going to talk to you about how coffee originated and it's reached to your mouth by traveling globally. So here I go. Coffee originated in Ethiopia, where it was discovered by a goatherd named Kaldi and later developed into a popular beverage in Yemen during the 15th century. The story of coffee begins in the Ethiopian highlands, particularly in a region known as Kefa or Kafa. According to legend, a goatherd named Kaldi noticed that his goats became unusually energetic after eating the red berries from a certain shrub. Intrigued by their behavior, Kaldi tried the berries himself and experienced a similar burst of energy. He shared his discovery with a local monk who brewed a drink from the berries to help him stay awake during long hours of prayer. By the 15th century, coffee plants were cultivated in Yemen, where Sufi monks began to brew coffee as a beverage. They used it to aid concentration during meditation and night prayers. The drink quickly gained popularity, spreading to nearby regions such as Makkah, Cairo. Coffee houses known as Kwaha Khanesh began to emerge, becoming social hubs for conversation, music, and games. Through trade routes, coffee made its way to Europe by the 17th century, where it became a fashionable drink. Coffee houses flourished in cities like Venice, London, and Paris, serving as centers for social interaction and intellectual discourse. The beverage's popularity continued to grow, leading to its cultivation in the various parts of the world, including the Caribbean and South America. Coffee in India is not only a beverage, but also a cultural symbol. It is consumed in various forms, including instant coffee, ground coffee, and fresh coffee beans. The country's coffee culture is deeply rooted in its history and is influenced by its diverse population and geographical regions. Domestic consumption. Coffee consumption in India has grown significantly, with a young and curious consumer base deriving the demand. Homegrown brands are seen a clear trend of rising demand, with companies like Rage Coffee experiencing a five-fold revenue increase. India is one of the top countries in coffee export, with over 70% of the coffee produced in India being exported. The major export includes Robusta coffee beans, green coffee beans, and instant coffee. The story of coffee in India began in 1600s when Baba Budan, a revered Sufi saint, traveled to Yemeni port of Mocha. During his pilgrimage, he encountered coffee and recognized its potential. To introduce this beverage to India, he smuggled 7 coffee beans in his bearded back to India. Planting them in the Chikmagalur region of Karnataka, this act is considered the birth of coffee cultivation in India, and the hills where he planted the beans are now known as Baba Budangiri. Following Baba Budan's introduction of coffee,
The cultivation of coffee began to spread across southern India, particularly in the Western Ghats. The region's climate and soil conditions proved ideal for coffee growth. By the 19th century, coffee had become a significant agricultural product, especially with the establishment of organized plantations by the British East India Company. They recognized the potential of fertile lands in Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu for coffee farming, leading to establishment of large coffee estates. Coffee quickly gained popularity in India, becoming an integral part of social life and culture. It was not just a beverage, but a symbol of hospitality and community. The unique brewing methods such as South Indian filter coffee emerged, showcasing the rich flavors of Indian coffee, often characterized by hints of spice and chocolate. Today, coffee in India is recognized as one of the world's largest coffee producers, largest being Brazil, Vietnam, Indonesia, and few others, with Karnataka being the leading state in coffee cultivation. The country is known for its high-quality Arabica and Robusta beans, and coffee continues to play a vital role in agricultural economy. In summary, the origin of coffee in India is deeply rooted in the region of Baba Bhudan, whose actions not only introduced coffee to the region but also laid the foundation for a thriving coffee culture that continues to flourish today. India boasts a vibrant coffee culture with several popular brands known for their quality and unique flavor, including Nescafe, Brew, Tata Coffee, and Blue Tokai. Popular coffee brands, Nescafe, one of the most recognized instant coffee brands in India. Nescafe offers a range of products, including Nescafe Classic, Nescafe Gold. It is known for its smooth taste and convenience, making it a favorite among coffee drinkers. Brew, another leading brand. Brew is famous for its instant coffee and filter coffee products. Brew Gold is particularly for its rich flavor and aroma, appealing to many coffee lovers in India. Tata Coffee offers a variety of coffee products, including instant coffee and ground coffee. Tata Coffee Grand is a well-known instant coffee brand that widely consumed across the country. Blue Tokai, this brand focuses on specialty coffee and is known for its high quality, freshly roasted beans sourced from Indian coffee estates. Blue Tokai offers a range of single origin coffees and blend catering to coffee enthusiasts looking for unique flavor. Coffee Day, known for its coffee chain, Coffee Day also sells packaged coffee, particularly including ground coffee and instant coffee. It is a popular choice for those who enjoy cafe-style coffee at home. India is home to several coffee growing regions, each producing distinct flavors. For example, Chikmagalur, known for its smooth and balanced Arabica coffee, often with chocolate and spice notes. Coorg, famous for its Robusta coffee, which has a bold body and earthy aroma, making it popular in both domestic and international markets. These brands represent just a fraction of the diverse coffee options available in India. Whether you prefer instant coffee for instant or specialty coffee for a richer experience, there are plenty of choices to explore. Always consider trying different brands and blends to find the one that best suits your taste preferences. Thank you very much. Jai Hind, Jai Maharashtra. जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अगर साहब आपने तो बहुत रिसर्च किया, मेरे को लगा पूरा 1 महीना आपने रिसर्च ही करेगा हो। हम लोग को कॉफी मास्टर बना दिया, कॉफी ड्रिंकर से कॉफी मास्टर बन गए, ऐसा लग रहा है। If it can help anybody actually to appreciate what goes in coffee, then it's okay. लगता है ऑपरेशन मैनेजमेंट का भी एमबीए स्टूडेंट को कॉफी का प्रोजेक्ट देना चाहिए। कॉफी का बहुत अच्छा बोला आपने। Thank you very much, sir.
सलूजा साहब, मैं आपसे सॉरी बोलता, आपका नाम बुलाना भूल गया था। आइए, बी दी ऑनर ऑफ हैविंग यू एज द लास्ट स्पीकर। आइए सर। Thank you, sir. Good evening to friends. Today, my topic is when the kitchen falls silent. Have you ever thought that cooking is not just a household chore? It is the invisible thread that binds families together. In the 1980s, when the American homes began moving away from cooking and leaned more on takeout and restaurants, a few economists issued a warning. If the state takes care of the children and the elderly and private companies provide the food, then the very foundation of the family will weaken. At that time, very few paid attention, but the statistics tell the story. In 1971, 71% of American households were traditional families, means husband, wife, and children living together. Today, that number has shrunk to just 20%. Where did the rest go? Nursing homes, rented apartments, fragmented lives. Now, 15% of women live alone, 12% of men remain isolated within families. 41% of children are born outside of marriage. This collapse is not an accident, it is the hidden social cost of closing the kitchen. Why does a home cooked meal matter? Because food at home is not just nutrition, it is love, bonding, and belonging. When families sit together around the table, hearts draw closer, children absorb wisdom from grandparents, and relationships soften and grow warmer. But when each person eats alone, scrolling on their device, the house becomes a guest house. And family ties resemble social media friends, formal, distant, temporary. The hidden cost of eating out is equally alarming. Inferior oils, artificial flavors, and fast food addiction have created generations struggling with obesity, diabetes, hypertension, and heart disease. Even among the young, today corporations decide what we should eat while pharmaceutical companies profit from keeping us healthy. We carried home cooked food even on long journeys, but today's generation sit at home yet order from outside and call it convenience. It is not too late. We can rekindle the kitchen, not just the stove, but the warmth, protection, culture, and health that come with it. Because a bedroom makes a house, but a kitchen makes a family. Lessons from around the world prove this point. Japanese families still emphasize cooking and eating together, which is one reason their life expectancy is among the highest in the world. Mediterranean households view mealtimes as a sacred rituals, and scientists link this to both stronger family ties and healthier lifestyles. Even in corporate leadership, breaking bread together remains a symbol of trust and bonding. The kitchen is not just where food is prepared, it is where relationships are nourished, traditions are carried out forward, and families are held together. Thank you very much. बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया बोला आपने सलूजा जी। दैट the one place for the family meet is the dining hall, actually, dining table. Yeah, and that brings up the culture of the family, the bondage of the family. Great thought. But possibly children will say irrelevant thought, but it's a great thought, no doubt about it. Thank you very much. With that, we come to a conclusion round of the monthly subscription report. Look forward to seeing you the next month once again in the month of December. Hey.
हेलो। थैंक यू सर, बहुत मजा आ गया। नहीं नहीं, अब सब आप बहुत मजा आया सब मेरा। अपने चेहरे तो दिखा दीजिए मैडम। नहीं, मेरा चेहरा खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर मैं वो गाना गाऊंगा तो सेंसर नहीं अलाउ करेगा। नहीं, बट फिर भी मैंने मेरे हस्बैंड धन्यवाद। का मैंने मेरे आर हस्बैंड का के मोबाइल लिया है। उनका मोबाइल लिया है। आज मेरा डिफरेंट टॉपिक्स, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक्स सुनने को मिला है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। कॉफी से शुरू करके गोत्रम और आपका टॉपिक एंड मोदी सर का या जापान का, भारतीय नहीं जापान नहीं, का बहुत एक अच्छा। स्मॉल पॉइंट था, चाहे हमारी टिकट बुक्स हो है, लेकिन टू रीच फ्रॉम द प्लेस वेर यू स्टे टू द एयरपोर्ट और द स्टेशन और बैक टू द होटल, वो उस कंट्री और सिटी और उस प्लेस का असेसमेंट होना चाहिए। अभी शादी के सारे रास्ते बंद है, फिर क्या करें? बहुत अच्छा लगा। सलूजे सर फिर का डाइनिंग हॉल, अरे वाह, एक से बढ़कर एक। एक से बढ़कर एक टॉपिक, सच्ची में वेरी मैं नाइस। तो चाहता हूँ कि लोग पार्टिसिपेंट और करें। गाना गा गा के हम थक गए, लेकिन अब क्या, कुछ बोलना तो चाहिए, सुनना भी चाहिए मेरे को स्पेशली। गाने से भी नहीं थके हैं। गाना भी गाना नहीं है, नहीं नहीं, सुनना एक है। ही चीज को होल्ड करके मत कीजिए, वैरायटी कीजिए। एक दिन हम ऐसा करेंगे, किचन केटरिंग का एक कॉन्टेस्ट रखते हैं, सब लोग पॉटलॉक एक एक चीज लाइए और पिकनिक मनाइए। ये मेरा सजेशन है। ठीक है लेट्स मेक नवीन ईच साहब। वन वन डिश, ओके। स्वीट और सावर वट एवर, नॉट रेडीमेड। हाथ से बनाइए हस्बैंड वाइफ, और लेके आइए, और 10-15 जो